Hello and welcome to the Maharashtra Brief. If you're looking for news from Mumbai and Maharashtra, this is the show you should be tuning into on NDTV's YouTube platform. All the news stories that are important and may have been missed in television from across the state will be here on NDTV's digital platform in the form of Maharashtra Brief. And of course, on the show tonight, we're looking at three top stories. One, of course, is this meeting between Chief Minister Devendra Fadnavis and Deputy Chief Minister Eknath Shinde, signaling a thaw between the allies after a row during the campaign of the local body elections. Also on day 2 of the Maharashtra winter session of the Assembly, a cash bomb dropped by the opposition dominates, and that of course is the second top story we're looking at. And finally on the show, the Civil Aviation Ministry finally steps in. A team visits the Mumbai airport and lauds the airport for taking care of passengers during the Indigo crisis. That's all we're looking at on the show. Let's move on to the headlines. Chief Minister Devendra Fadnavis and Deputy Chief Minister Eknath Shinde meet for a long time to sort out differences between the Shiv Sena and the BJP after the row between the two parties in alliance during the local body polls campaign. And in a stormy session of the winter session of the Maharashtra Assembly, day 2 was equally high voltage, with the opposition dropping what it calls is a cash bomb. And of course, this dominated the day 2 of the winter session of the Maharashtra Assembly, which is going on in Nagpur. And finally on the show, the Civil Aviation Ministry steps in. A top official of the Civil Aviation Ministry visits the Mumbai airport and takes stock of the situation, lauds the airport for taking care of passengers during the Indigo crisis. Let's move on to our top story. Now, this, of course, comes from the world of politics. And in a state that has seen a run-in between two allies, the Shiv Sena and the BJP, especially during the campaign for the local body elections that are ongoing in the state, the Chief Minister Devendra Fadnavis and Deputy Chief Minister Eknath Shinde met to iron out the differences. And what we are getting to here is that the Shiv Sena and the BJP and of course the Mahayuti will contest together in the municipal corporation elections, which are to be held soon. My colleague Abhishek Avasthi has more on this story. The recently held local body election clearly pointed out the rift between Mahayuti, especially Shiv Sena and the BJP. What we understand from our sources that a late night meeting between Chief Minister Devendra Fadnavis and Deputy Chief Minister Eknath Shinde concluded, wherein both of them came to a point that now further elections, specifically of municipal corporation, focusing on Mumbai and Thane and other corporations, will be contested as a united front as Mahayuti Alliance. In fact, Minister Chandrasekhar Bawankule and BJP State President Ravindra Chavan were also present in that meeting, and every conflict that has arisen earlier and difference of opinion and many other things were also discussed, and a way forward was strategized. In fact, in near future, the local leaders of different corporations will sit together and formulate a strategy taking along Mahayuti, the alliance Shiv Sena and BJP together. And at the same time, it was again discussed that none of the office bearers, leaders or party workers will be taken from either sides, as a non-poaching pact. Both the parties should follow the alliance dharma that was finally once again discussed. Now we will have to wait and watch out for whether the pact or the discussions that were held between the two leaders are being followed in future or not. And moving on to our second story on day 2 of the Assembly session, the winter session of the Maharashtra Assembly, the opposition stepped up its attack on the government. This, of course, comes in the form of a cash bomb. And this is something that will dominate proceedings in the days to come as well. But this is something that has already happened. My colleague Anuj Rayate spoke to Ambadas Danve. And here's what he told Anuj earlier today.
महाराष्ट्र का विंटर सेशन शुरू होते हुए आज दूसरा दिन आ गया है और आज के दिन की शुरुआत में ही शिवसेना यूबीटी के सीनियर नेता अंबादास दानवे जी ने एक तरीके से कैश बॉम्ब फोड़ दिया है। हमने देखा था कैसे पिछले साल भी 50 खोके सब कुछ ओके इस टैगलाइन को ध्यान में रखे हमने देखा कि कैसे शिवसेना शिंदे फैक्शन के नेताओं के ऊपर एक तरीके से हमला बोला गया था। उसी तरीके से अभी वापस उसी नैरेटिव को चलाते हुए अंबादास दानवे सामने आए। सर, आपने एक वीडियो ट्वीट किया सुबह। मैं वीडियो के बारे में जानने से पहले आपकी मंशा जानना चाहूंगा कि क्या था एग्जैक्टली आपकी सोच क्या थी इस वीडियो को डालने के पीछे? मेरी सोच कोई पर्सनल नहीं है। मेरी सोच इस महाराष्ट्र के बारे में है। मेरी सोच है, मैं ग्रामीण एरिया से काम करता हूँ, संगठन का, पार्टी का, लोगों का, और पिछले महीने 2 महीने में ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में जिस प्रकार किसानों की हालत जो खस्ता हुई है, और सरकार ने 31,800 करोड़ का पैकेज दिया है। किसानों को पैकेज तो पहुंचा नहीं है। कुछ जगह किसानों को 6 रुपये, 50 रुपये, 55 रुपये, 110 रुपये इस प्रकार की मदद सरकार ने दी है, और उन्होंने घोषणा की थी 31,800 करोड़ का पैकेज। मैं समझता हूँ किसानों को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, और आपके जो पावर में पार्टी है उनके लोगों के पास करोड़ों रुपए पड़े। मैं समझता हूँ ये करोड़ों रुपए कहाँ के हैं? ये तो जनता के लूटे हुए हैं। ये तो कोई खेती करके कमाए हुए नहीं है। ये तो कोई फैक्ट्री का प्रोडक्शन करके बेच के मिले हुए नहीं है। जनता के लूट के पैसा ये है, और तुम्हारे पास ये पैसा जमा है। फिर तुम एक जगह कहते हैं कि महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और एक जगह महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति इस प्रकार की है। इस हेतु से मैंने ये वीडियो ट्वीट किया है। इसमें मैंने किसी पे कुछ आरोप भी नहीं किया है। मैंने सिर्फ अभी सरकार ने इसके तरफ सीएम साहब और डीसीएम साहब ने देखना चाहिए, इतना कहा है। आपने कहा कि इसमें कुछ पर्सनल नहीं है, पर महेंद्र दड़वी जो कि शिंदे सेना के विधायक है, जिनका चेहरा काफी क्लियरली दिख रहा है, उन्होंने कहा है कि ये वीडियो मॉर्फ्ड है। इनकेस उन्होंने ये भी कहा है कि इस वीडियो को काउंटर करने के लिए वो कोर्ट में भी जाएंगे आपके खिलाफ। बिल्कुल कोर्ट में जाना चाहिए, पुलिस में भी उन्होंने कंप्लेंट करना चाहिए, और इस वीडियो की जांच करनी चाहिए। अगर इसकी जांच हुई तो पुलिस का पूरा कोऑपरेशन मेरा रहेगा। फाइनली मुझे ये पूछना है सर कि पिछले साल कुछ ही महीनों पहले हमने देखा इससे रिलेटेड कुछ लोग थे, ऐसे काफी सारे लोग थे शिंदे सेना के जिनके ऐसे वीडियो सामने आए। आपको लगता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं एक तरीके से थोड़ी ज्यादा ही फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है उनके साथ डील करने में, क्योंकि होम मिनिस्ट्री तो बीजेपी के पास है जो कि डिसिप्लिन को काफी इंपॉर्टेंस देते आए हुए हैं? मैं समझता हूँ अगर तुम्हारे मेरे जैसा कोई व्यक्ति बैंक में गया तो उसको 50,000 रुपये अकाउंट में डालते भी नहीं आते हैं और निकालते भी नहीं आते। आपको आईडी प्रूफ देना पड़ता है। अगर ऐसा विदाउट कुछ किए तो उसकी इंक्वायरी होती है, नोटिस आती है। सही है, इसमें कोई गलत है सरकार का ऐसा मैं नहीं कहूँगा। ये सरकार ने ये करना ही चाहिए, लेकिन एक तरफ ये ऐसा न्याय है और एक तरफ करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, तो ये क्या है? हम करोड़ों रुपए हमारे पास है तो ठीक है, उसका हिसाब होना चाहिए कि मेरा उत्पन्न क्या है, मेरा कहाँ से करोड़ रुपए आया है, मैंने क्यों घर में रखा है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसा कोई भी इतने पैसे नहीं रख सकता ना, मेरा ये कहना है। अगर हाँ ठीक है, ऑफिशियली उनका उतना इनकम होगा और उनके घर में रखे होंगे तो मैं मान्य करूँगा, लेकिन सरकार दोहरी पद्धति से न्याय देता है, ये भी मेरी इसमें भूमिका है। क्या आप डिमांड करोगे कि उनका निलंबन किया जाए सदन से? नहीं, मैं निलंबन के लिए मैंने नहीं किया। मुझे व्यक्तिगत उनसे कोई कंप्लेंट व्यक्तिगत रूप से उनसे नहीं है, मेरी ओवरऑल विचार के रूप से मेरी कंप्लेंट है। ये थे हमारे साथ शिवसेना यूबीटी के सीनियर लीडर अंबादास दानवे। And finally on the show, the Civil Aviation Ministry has stepped in after the Indigo crisis. Officials from the ministry visited top airports across the country, amongst them the Mumbai airport, which is one of the busiest airports, and felt amongst the highest impact of the Indigo crisis. While these officials interacted with all stakeholders, they also lauded the airport's efforts to minimize the discomfort for passengers during the Indigo crisis. And my colleague Abhishek Avasthi has more on this story. Amid the ongoing Indigo crisis, which seems to be gradually subsiding,
today at Mumbai International Airport, a surprise audit inspection by Joint Secretary of Civil Aviation was done, and the Joint Secretary met the staff of Indigo, interacted with the passengers, and understood the current operations being going on inside the Mumbai International Airport, and he was appraised by the airport authority that everything is being going on smoothly. In fact, there is a collaboration between the airport authority along with the Indigo staff and CISF, and everything is being managed smoothly. Every 6-hour update of cancellation is being given to the customers of the flights by Indigo. At the same time, baggage are being managed. What we understand that after the inspection, when the Joint Secretary spoke to the media, he spoke about how things are better being managed now, and he said that can't say that when exactly the normalcy will come, but 90% of normalcy can be witnessed. At the same time, 70% operation of Indigo at Mumbai Airport is back to normal, is what he said. And at the same time, when it was asked that what kind of action will be taken against Indigo, definitely he pointed out that preliminary inquiry is being going on. Let the report come, and further action will be decided by the Civil Aviation Ministry. Well, that's all we have on the show tonight. Thank you so much for watching the Maharashtra Brief, your daily dose of news from Mumbai and Maharashtra, where we don't miss any of the top stories from the state and bring it to you on the Maharashtra Brief on NDTV's YouTube platform. For all the latest news and updates from India and across the world, keep watching NDTV.